Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padat Begyan. So students, ajir video re ame discuss kariba the rules for making ray diagrams. So in the chapter reflection of light, we have to draw lot of ray diagrams of concave mirror and ray diagrams of convex mirror. The ray diagram re ame kon show karanti? We have a mirror, then we have object which is placed at some distance from the mirror, and then we have to find out where the image will be formed. What will be the nature of image? Image ta real image habo, na virtual habo, image ta magnified habo, na diminished habo. So all these things can be shown using ray diagrams. But while drawing the ray diagrams, we must follow some rules. जदि में से rules को भल से follow करिबा, ठीक से follow करिबा, then we can draw correct ray diagram. And जदि में से rules को follow न करिबा, then the ray diagram will be wrong. So before drawing the ray diagram, we must know all the rules and then we should follow it. So in this video, I will discuss about the rules to draw a ray diagram, the rules for making ray diagrams in case of concave mirror. Concave mirror रे हमें जो ray diagram draw करंती ता पाई कौन सब rules अच्छी. So let's begin. तो first discuss करिबा rule number 1. तो rule number 1 कौन कहूची? A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror. The first rule कौन कहला? जेते हमें ray diagram draw करूचे, जदि incident ray टा अच्छी parallel to the principal axis of a concave mirror, then कौन हबो? Reflection परे, after reflection, the reflected ray will pass through the focus of the mirror. ता माने जदि incident ray थिबो parallel to the principal axis, then reflected ray pass करिबो through the focus. आपको हमें देखिबा using the diagram. बे देखो हमें गोटे concave mirror नेचे, ए concave mirror रा P होची तार pole, F होची तार principal focus, और C होची center of curvature. ठीक अछि, P F C तीनटा पर निया गला. Then हमें गोटे object एठी रखिबा, A B होची object. ओके, तो एबे हमें कौन करिबा? Point A रु गोटे incident ray हमें draw करिबा. देखो this yellow color line is incident ray, जोटा कि point A रु बाहरला, and you can see that the incident ray is parallel to the principal axis. ठीक अछि, and when this incident ray strikes the mirror, it will be reflected. So after reflection कौन हबो? The reflected ray will pass through the focus of the concave mirror. You can see that this blue color line is the reflected ray. So this reflected ray is passing through principal focus of the concave mirror. So this is the first rule you have to remember. Jodi incident ray thibo parallel to principal axis, then the reflected ray will pass through focus. Then we'll go to the rule number 2. The rule number 2 कौन कहूची? A ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. जदि गोटे incident ray pass करूची through center of curvature बा through the point C of a concave mirror, then कौन हबो? It is reflected back along the same path. से जो रास्ता रे जाइथिबो से रास्ता रे से back करिवो. बाकी में कहि परिबा it will retrace the path. ताको में देखिबा using diagram. तो हमें गोटे मिरर नेले, देन हमें गोटे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कले, ए बी होच ऑब्जेक्ट. एबे हमें कोन करिबा? पॉइंट ए रु गोटे इंसिडेंट रे नबा, and you can see that the incident ray is passing through the center of curvature C of the concave mirror. ठीक अछि, तो एबे जो इंसिडेंट रे टा पास कला through center of curvature, after striking the mirror it will be reflected. तो after reflection से को रास्ता रे जीवो? Let's see. एबे देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन होची? द रिफ्लेक्टेड रे इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ. जो रास्ता रे आसला से रास्ता रे से पुणी बैक करूची. दिस ब्लू कलर लाइन इज द रिफ्लेक्टेड रे. आको में कहंती रिट्रेस ऑफ पाथ. सो रूल नंबर 2 कौन होची? जदि इंसिडेंट रे पास करूची थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रिफ्लेक्टेड रे will be reflected back along the same path, but it will retrace the path. Now we'll go to rule number 3. So rule number 3 कौन कहूची? A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. So rule number 3 is opposite of rule number 1. Rule number 1 रे कौन थिला? जदि incident ray थिबो parallel to principal axis,
then the reflected ray will pass through focus. Rule number 3 तार opposite कौन कहूची जदि incident ray pass करूथिबो through the focus of a concave mirror, then the reflected ray will become parallel to the principal axis after reflection. तामाने कौन देखो आमे गोटे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कले ए बी होची ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एबे में कौन करिबा पॉइंट ए रु गोटे इंसिडेंट रे नबा जोटा कि पास करिवो थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. तो in this diagram you can see that the incident ray is passing through focus of the mirror. After reflection कौन हबो the reflected ray will become parallel to the principal axis. This blue color line represents the reflected ray. So you can see that the reflected ray is parallel to the principal axis. So this is rule number 3, which is opposite of rule number 1. Next देखिबा rule number 4. तो एटा कोन कहूची a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. देखो गोटे डायग्राम ड्रॉ करबा में ए बी होची ऑब्जेक्ट ठीक अछि एबे कोन अपना पॉइंट ए रु गोटे रे ऑफ लाइट जीवो गोटे इंसिडेंट रे जीवो फ्रॉम पॉइंट ए आ से इंसिडेंट रे asi कोडी पडिबो एट द पोल. देखो येलो कलर में ड्रॉ कले इंसिडेंट रेटा. सो द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर एट द पोल ठीक अछि. तो एबे कोन हबो अगेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड. सो रिफ्लेक्शन पर कोन हबो एबे देखो हमें जानि छे जे ए केस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस कोटा हबो ना एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. और नॉर्मल कोटा हबो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम जो जॉइन करछे पोल रे दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू दिस मिरर एट द पॉइंट पोल. तो एबे देखो इंसिडेंट रे आउ प्रिंसिपल एक्सिस भितरे जो एंगल आसुची सेटा होची आई माने कोन एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक अछि. तो एबे देखिबा जे रिफ्लेक्टेड रेटा कोबाडे जीवो. सो रिफ्लेक्टेड रे देखो जो the blue line is the reflected ray and what is the angle of reflection this one एटा होची r होची angle of reflection. तो I और r रा वैल्यू इक्वल हबो एटा होची the law of reflection angle of incidence is equal to angle of reflection. ओके तो I इक्वल r हे गला जदि हमें इंसिडेंट रे को देखि पोल रे इंसिडेंट करूचे ताले कोन हबो जति का एंगल रे आसले इंसिडेंटा रेटा से सेम एंगल रे कौन हम लाइट रिफ्लेक्ट हम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक अच्छे आई इक्वल आर. तो ये भाई आम रे डायग्राम सब ड्रॉ करि परिबा. तो नाउ लेट अस समराइज ऑल द रे डायग्राम्स. आम चारटा रूल्स पढ़िले ताको समराइज करबा. तो फर्स्ट रूल कौन कहूची ना जदि इंसिडेंट रे थिबो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे कौन हबो पासेस थ्रू फोकस. रूल नंबर 2 कौन कहला जदि इंसिडेंट रे थिबो pass करूथिबो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन कोन हबो इट विल रिट्रेस द पाथ ता माने इट विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ. रूल नंबर 3 कोन कहूची जदि इंसिडेंट रे पास करूथिबो थ्रू द फोकस ऑफ ए concave mirror then the reflected ray will become parallel to the principal axis. आ रूल नंबर 4 कोन कहूची जदि इंसिडेंट रे को हमें पोल रे इंसिडेंट करबा ताले कोन हबो it will be reflected making the same angle with the principal axis but below the principal axis. It will make the same angle with the principal axis. तो ये चारिटा रूल्स को हमें फॉलो करिबा. बेसिकली रूल नंबर 1 2 3 दैट्स इंपोर्टेंट. 4 को भी हमें यूज करिबा बट 1 2 3 आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम फॉर concave mirror ठीक अछि. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द रूल्स क्लियरली. तो नेक्स्ट आम एते बळे रे डायग्राम ड्रॉ करबा concave mirror रो तमर एनसीआरटी बुक रे रे डायग्राम देछि. यू कैन फॉलो दोस रे डायग्राम्स आ देखिबो जे सबु केस रे ए रूल्स को फॉलो करा हिछि. जदि ए रूल्स को भल से फॉलो करि परिबा ठीक से फॉलो करिबा देन वी कैन ड्रॉ एक्यूरेट रे डायग्राम्स. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द रूल्स. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करिबा द रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम in case of convex mirror. So till then have a nice day and bye bye.